नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। हर संडे में किसी एक टॉपिक पे आपसे बात करता हूँ और आपको कुछ न कुछ देने की कोशिश करता हूँ। एवरी संडे दी अटेम्प्ट इज टू इंश्योर दैट you get some input which is so critical in running your own urban cooperative bank. Today I am going to talk about the one concept, that is risk appetite. Of course, there is a series of risk management practices for urban cooperative banks which is under production. Once those risk management aspects are complete, the series I'll start uploading on the basic concept of risk management and how the risk organization you should have. But I thought of preempting certain things in the sense that recently the Reserve Bank of India from couple of banks during its inspection has been calling for a statement which is popularly known as risk appetite statement. Now, whether you know risk management or otherwise, but this is one particular concept which you should certainly know. Risk appetite statement of the bank. You might be recollecting I had made a video on business model. A couple of years ago, Reserve Bank of India started asking all the banks, especially the big banks, what is your business model? And this year they are asking you to give a write-up on the risk appetite statement duly approved by the board. Now these two statements, one is business model and the other is risk appetite statement, appear to be diametrically opposite, but they are not. They are not. So risk appetite statement basically takes care of your business model positions that you have taken. Now here is a story where you have already submitted a business model to Reserve Bank of India and now you are asked to write a risk appetite statement. So let's understand what is this risk appetite. You know the word appetite. Appetite का मतलब ये है कि हमारी ताकत क्या है in terms of doing business or in terms of doing anything. What is your appetite? What is your food appetite? अब 2 रोटी खाते हो, 5 रोटी खाते हो, 10 रोटी खाते हो, वो आपका appetite है जो आप पचा सकते हो. Appetite का मतलब है what you should chew, what you can digest. उतना ही खाओ जितना आप पचा सकते हो. तो रिजर्व बैंक ये जानना चाहती है कि आप क्या खा रहे हो और वेदर वो उसको आप पचा रहे हो या नहीं रहे हो. Professionally, it is known as appetite of a bank to take risk. So risk appetite statement is basically a statement which expresses several things about the institution. Several. हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट होता क्या है. रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट सिंपली it's a statement by the board which talks about the types of risk that the bank is willing to accept to reach its business objectives. यानी आप बैंक चलाते हो तो आपकी एक रिस्क एपेटाइट होती है कि ये प्रपोजल रिस्की है और ये प्रपोजल रिस्की नहीं है. Now it's very easy to say that this is a risky proposal and this is not a risky proposal, whether it is credit or otherwise, or whether it is technology. This is risky and this is non-risky. हम हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं इसमें रिस्क ज़्यादा है. But if somebody asks us to write, jot down the risk points, क्या रिस्क आपको लगता है, वो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं. हम लोग सब्जेक्टिवली रिस्क इवैल्यूएट करते हैं और सब्जेक्टिवली डिसीजन लेते हैं. Now here is the Reserve Bank of India which is trying to understand the risk appetite of a bank and where the linkage is with your business model. What is the business model that you have designed and submitted to Reserve Bank of India? Risk appetite का मतलब ये भी है कि हम सब जानते हैं, whether we are bankers or otherwise, हम सब जानते हैं कि अपने बिजनेस में जोखिम क्या है, वो जोखिम हम कहाँ तक उठा सकते हैं. अगर किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी एग्जीक्यूटिव को पूछा कि भाई रिस्क एपेटाइट आपकी क्या है या आप कहाँ तक लोन देते हो, सॉरी, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ रिस्क एपेटाइट दैट यू हैव. एंड देयर इज अनदर वर्ड which is being
asked by Reserve Bank of India, referred by Reserve Bank of India in various discussion, and that is risk tolerance. तो टॉलरेंस का मतलब भी यही है कि भाई हम लोग कहाँ तक रिस्क, जो हमारी रिस्क की लेवल है या लिमिट है, वो हम कहाँ तक ब्रीच कर सकते हैं, हमारी हैसियत क्या है, अंदरूनी हैसियत क्या है. सो रिस्क एपेटाइट को हम ये कहेंगे कि जोखिम लेने की हैसियत, हम कहाँ तक जोखिम ले सकते हैं. रिजर्व बैंक तो ये सब आपको अंग्रेजी में पूछना चाहेंगी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ने आजकल क्यों मांगना चाहा है, क्यों वो मांग रही है. बीआर एक्ट आने के बाद सब फ्री हो गया. देयर इज वन सिंगल रेगुलेटर, and therefore Reserve Bank of India is trying to adopt a very strict approach in terms of risk also. अभी छोटे बैंकों के लिए रिस्क मैनेजमेंट या ये कुछ कंसेप्ट आया नहीं है, लेकिन उनको ये समझना जरूरी है कि आज नहीं तो कल वो आएगा. तो वो ये कहते हैं कि ये रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट हम किस लिए मांगते हैं बैंकों से. सिंपल. One of the IOs told me in a very simple language which you also can understand. The statement he made is this: by failing to prepare, you are preparing to fail. अब तैयारी अगर नहीं कर रहे हो, you are failing to prepare का मतलब ये है आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो, you are preparing to fail. So simple yet so effective कि भाई हमें तैयारी करनी है, we have to be ready. And therefore I am going to talk a little bit about the risk appetite. अब ये risk appetite जो है सिंपल और सादा मतलब आप समझ के ले लो कि हमारी हैसियत क्या है. तुम्हारा बैंक 100 करोड़ का है मान लो, और कोई बंदा आया और उसने बोल दिया मैं आपको 500 करोड़ का डिपॉजिट देता हूँ. क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है 500 करोड़ का डिपॉजिट लेने में, क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है ये 500 करोड़ का आप करोगे क्या, खाई में जाके गिरोगे. तो ये आपकी एपेटाइट नहीं है, ये आपकी एपेटाइट नहीं है. तो 100 करोड़ के डिपॉजिट में अगर कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ का डिपॉजिट लेके आता है, दैट इज योर एपेटाइट, बिकॉज यू नो हाउ टू यूज इट इन अ लोकल इकोनॉमी. सिंस यू हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट्स व्हाट एन एग्जांपल ऑफ रिस्क एपेटाइट इज. और फिर ये एग्जाम्पल ऑफ रिस्क एपेटाइट कैन बी एक्सटेंडेड एवरीवेयर इन एवरी एरिया ऑफ द बैंकिंग, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू राइट. आपको रिस्क एपेटाइट का मतलब ये कि आपको जोखिम निर्धारण करना है. मान के चलो कि आपको क्रेडिट डिपार्टमेंट में रिस्क एपेटाइट तय करना है कि तुम्हारा रिस्क एपेटाइट क्या है. पहला तो रिजर्व बैंक ने दे दिया तुम्हारा रिस्क एपेटाइट. क्या दे दिया रिजर्व बैंक ने, आपके ऊपर लेंडिंग के रिस्ट्रिक्शन डाल दिए. 15% जो एक्सपोजर लिमिट है और 25% क्रॉस है. दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड दिस इज योर रिस्क एपेटाइट बॉस. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस. अब उसमें भी अगर आप अच्छी बैंक है, आप मार्जिन रखेंगे. जैसे कि सिंगल पार्टी एक्सपोजर आपका 10 करोड़ का है, तो आप किसी भी सिंगल बंदे को आप 10 करोड़ नहीं देंगे. क्या दोगे आप, 8 करोड़, 7.5 करोड़, समथिंग लाइक दैट. यू विल कीप मार्जिन. सो यू आर डिस्क्राइबिंग योर रिस्क एपेटाइट in your internal exposure limit as far as credit is concerned. Same story will go for the group exposure. You will have to decide risk appetite industry wise, some 10 or 15 industries. You will have to decide. Normally the expectation is that single industry exposure should not exceed 15%. वही वो सीआरई का जो आया है ना 15% का, वो इसी वजह से आया है कि you should not put all your baskets eggs in one basket. And when you're not going to put all your eggs in one basket, your risk is spread. Here under you can have a definition, internal definition. कि भाई हम टेक्सटाइल को इतना देंगे, केमिकल को इतना परसेंटेज देंगे, हाउसिंग को इतना देंगे, इसको इतना देंगे. That is the description of appetite based on your business model. Now this statement has to be approved by the Reserve Bank of India, and checks and balances which are there in your credit policy would be describing the risk appetite as far as the credit risk is concerned.
एक्सपोजर आप डिवाइड करोगे, एक्सपोजर आप डिसाइड करोगे किस तरह से एक्सपोजर आपका होगा। दूसरा जो रिस्क एपेटाइट मुझे जो दिखता है वो आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। रिजर्व बैंक ने बोला है कि 0.20% ऑफ योर टोटल एडवांसेस should go to retail segment by 2024, where under your 50% of the portfolio should be under 0.20% or 25 lakhs, whatever that has been stated. I have been talking on that. The point is, for a smaller bank, this is easier to achieve. For bigger banks, it's very tough. इसका मतलब ये हुआ है कि आप तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो रिटेल की तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर डाइवर्टिंग दैट टू रिटेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी सेज दैट यू शुड हैव 50% ऑफ दिस रिटेल। अभी इसमें कई चीजों के जवाब नहीं आ रहे हैं। इंडस्ट्री अक्रॉस the delinquency in the retail is going up, and the urban cooperative banks have been thrust about this particular appetite. जैसे वो माँ बच्चे को बोलती है ना, ये रोटी नहीं खाएगा तो तेरे को खाने पर से उठने नहीं दूंगी। It's a compulsory food that child has to consume. Here, urban cooperative banks are child, and therefore Reserve Bank of India says 50% of your lending risk should be containing retail portfolio, because that's the core competency that the urban cooperative banks are having. Recovering retail is a core competency. अभी इसके ऊपर बहुत हो हल्ला चल रहा है। The federations and NAFCA are going to Reserve Bank of India to claim a relief on this. तो ये रिलीफ करना चाहिए। और दूसरा, एक आपका जब रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट आप बनाओगे तो उसमें आपको कैपिटल प्लानिंग करना पड़ेगा। You have to factor the growth of credit or total assets, that is total risk weighted assets, and what is your capital planning, because you can grow assets only to the extent of capital that you have, that is at least 9%. If you want to be in FSWM, 10% plus. If you want to be in FSWM, what is the applicable CRAR is, it should be 1% plus to be eligible for reckoning as an FSWM bank. So risk appetite retail banking का डिसाइड हो गया। You have to explain that how you are going to achieve that, and then there are market risk and liquidity risk. In case of liquidity also, you have to define the risk appetite of liquidity management. If you are having tremendously surplus liquidity, you are not managing your funds properly, but you are short of liquidity, मतलब ये है कि पहले 90 days में अगर आपका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट नेगेटिव आ रहा है, मिसमैच आ रहा है, you need to draw a concrete plan. The gap should not be more than 20%. That's what the regulatory guidelines are. इसका मतलब ये है, you need to raise your capital or plan otherwise. Normally we don't pay attention to off balance sheet items. अगर आप गारंटीज देते हैं या कुछ देते हैं तो उसके लिए भी आपको कैपिटल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट में आपको एक डिक्लेरेशन और एक देना पड़ता है कि भाई आप स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो या नहीं करते हो। Unless you do a stress testing, you will never know the impact of a particular event on your balance sheet. दूसरा मुझे ये लगता है कि with Basel III norms coming aggressively even for the cooperative banks in the near future, you will need additional capital. What is your plan of raising the additional capital, either by way of a different installment or various instruments which the Reserve Bank of India has approved? It's necessary for you to have a plan on that. Try to draw down this risk appetite statement coolly. Ensure that the linkages that are in your policy, whether it is credit policy, a deposit policy, any policy, a reference to that those policies is also required to be made, and risk once identified by you is also required to be provided for. The mitigants are required to be provided for. So the risk appetite statement is going to be a key statement in your ensuing inspection. And while you prepare this risk appetite statement, ensure that it is in line with whatever the policies and the business models that you have submitted to Reserve Bank of India. Keep the risk appetite statement in sync with whatever the other documents that you are having.
Try to locate the errors wherever you feel that there are gaps. Try to rework on those gaps. Inspection is changing, the methods are changing, the information seeking approach is changing, and it's therefore necessary that we should be aware of how the things are getting changed. Let me assure you that I am working on the risk management for the urban cooperative bank, whether it is small or big. It will be a series of 8 to 10 videos which will enable you to understand whether the designation of chief risk officer is applicable to you or not, because the chief risk officer is what assets beyond 5,000 crore or something like that, so it may not be applicable for all the banks. But then learning is staying awake, staying in afloat. So the risk management documentation, even if you are a small bank, you should have a small document. You are a banker, you are dealing in people's money, and therefore I'll be helping you in drawing the risk management policies. I'll cover up a couple of areas, and I'll also help you in locating the processes that you are required to adopt in respect of compliance management. Of course, it may not be applicable for you if you are a small bank, but then it will help you in keep things systematic and methodical. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कोऑपरेटिव बैंकिंग फ्रेंड्स को दीजिएगा, एंड मैं हमेशा वीडियो के नीचे मेरा ईमेल देता हूँ. यू कैन रीच आउट टू मी. एट टाइम्स जो क्वेश्चंस आर वेरी बिग एंड देयरफॉर आई रिस्पॉन्ड टू दैट. वी विल डिस्कस, बिकॉज कोई सवाल पूछ लिया और उसका जवाब अगर बड़ा होगा तो मैं मेल पे रिस्पॉन्ड करना सही नहीं समझता हूँ, बिकॉज simply asking a small question on YouTube or whatever or in mail doesn't help. It's necessary at times to talk, to really understand what ails your bank. I am available to you 24/7. You can reach out to me. Thank you. Thank you for watching. Thank you so much.